Okay, guys. Good afternoon, everyone, and welcome back to your chemistry class in your new session. Okay, I hope everybody has done really well in your 11th exams. Okay, so now talking about the 12th syllabus, what we are going to cover in the 12th. So, in the 12th class, we will have three portions in chemistry. First is physical chemistry, second is inorganic chemistry, and then we have organic chemistry. Right? In the physical chemistry, we have total of five chapters. In physical chemistry, we have total of five chapters called solid state, solid state, solution, electrochemistry, chemical kinetics, and surface chemistry. Okay, these are the five chapters which falls under the category of physical chemistry. So first we will be doing these five chapters, and hopefully they will be completed by end of June, by June end. Okay, so by June end we will complete our physical chemistry of class 12, and then coming to the inorganic chemistry. In inorganic chemistry, you are going to have total of four chapters. Those are metallurgy, then you have P block elements, then your D and F block elements, and lastly you have coordination compound. Okay, which we are going to do towards the end of the year. Okay, means after organic chemistry we will do the inorganic chemistry. Clear? In organic chemistry, when you are going to start organic chemistry, there are some part of class 11 organic chemistry, that is GOC and hydrocarbon, which will be required. So we will be doing the revision of GOC and hydrocarbon after June, means in the first 2 weeks of July. Then we are going to talk about the organic chemistry, that is the haloalkanes and haloarenes, right? Then we are going to talk about the alcohol phenol ether. Then we are going to talk about the carbonyl compounds. There are carbonyl compounds, two parts of carbonyl compounds. One is aldehyde ketone, another one is acid and acid derivative. Aldehyde, ketone, acid, acid derivative. Okay. After that, we are going to talk about the amines. Okay. These are the five major chapters in organic chemistry in class 12. After that, we are going to talk about the polymer. We are going to talk about the polymer, biomolecule, and chemistry in everyday life. Okay, we are going to talk about the chemistry in everyday life. Okay, once we are finished with this organic chemistry, we are going to start with the inorganic chemistry. Clear? Okay. Yes, Rajesh. So now coming to the today's class, what we are going to start today, we are going to start with this solid state. Okay. So today we will be starting with the solid state. Okay. So in just a few moments, we are going to talk about the learning objective of today's class. So if anybody has any doubt regarding the syllabus course plan for the next academic year, then quickly write in the chat section and we will discuss that first, and then we are going to
talk about this solid state. Yes, guys, quickly. Any doubt? Or are you guys all clear? Then let's start with the. So let's talk about the learning objective of today's class. What are the things which we are going to study in today's class? So we're going to talk about the introduction part. What is solid state? Then we are going to talk about the metric classification. Especially we are going to talk about the introduction of matter, then metric classification. Then we are going to talk about the solid characterization. What are the characteristics solids are going to exhibit? And at the end, we are going to discuss about the classification of a solids. How do we classify these solids? And on what basis we classify the solids? And in how many categories we can classify the solids? So the, that's the things, or these are the concepts which we are going to discuss in today's class. Okay, so let's start with the introduction part about the solid state. So talking about the introduction, let's classify the matter. How do you classify a matter? So before classifying the matter, the first thing which comes to your mind is what exactly is matter? What exactly is matter? So matter is something which occupies space and have some mass, which we have already studied in class 11. ये हम पहले पढ़ चुके हैं, right? 11th में पढ़ा था ना? Basic concepts of chemistry में. What is matter? What are the types of matter? Right? Now, how many states does a matter can exhibit? Okay, what are the types of matter? So, how many states are there? So, a matter generally have 3 states, right? And you always think, yes, sir, we already know that. So, what are those 3 states? Those 3 states are commonly known as solid state, liquid state, and gaseous state, right? These 3 states are solid, liquid, and gas. We have already discussed about the liquid state and the gaseous state in your class 11 state of matter. State of matter chapter in class 11, right? We had already discussed all of that in the 11th class. Now, in this chapter or in class 12, we are going to discuss about the solid state. What are the characteristics of solid state? What are the types of the different solids? How do we classify the solids? What are the different properties which we are going to discuss about? Okay, so we are going to talk about all of that in this chapter called solid state. Clear? So matter has 3 states: solid, liquid, and gas. Examples of solids are diamond, graphite, wood, etc. Examples of liquid is water, mercury, bromine. These are the examples of liquid. Examples of gas are oxygen, nitrogen, hydrogen, air. All these are the examples of gas. Clear? Now, let's talk about the classification of the solid. Let's talk about the classification of the solid. Characteristics of solid. Right? What are the different characteristics a solid is going to exhibit? Clear? So let's talk about it. कुछ तो करना पड़ेगा इसका, right?
So when you're talking about the characteristics of solid, then the first thing which should come to your mind is why are we studying about solid state at all, right? Why we are studying about the solid state? So at the solid states or the matter which is in solid state have different applications, starting from the portable devices like your mobile phone, your laptops, your computers, your pen, okay, your notebook. All these things are made of solid matters. The another application is in vehicles. Okay, so solid state is going to have very uh, vast application in vehicles, electrical vehicles, and so on. This is also used in telecommunication as well, right? So all these are the applications of solid states. But the reason why we are studying about the solid state. So let's talk about the characteristics of solids. So I'm sure you guys already know that solids have definite volume, definite mass, and definite shape. The intermolecular distance are short, intermolecular forces are strong, they're incompressible and rigid in nature, right? All these things I'm sure you guys already know because when we started the state of matter chapter in class 11, we discussed there what are the different types of matter, what are the properties of those matters, what is the property of solid, what is the characteristics of solid, what is the characteristics of liquid, what are the characteristics of gas. All those things we already discussed in last class, right? Sorry, in the state of matter in class 11, right? So I'm just revising that. So what are the characteristics or what are the properties of solids? So solids have definite volume, definite mass, definite shape. Solids also have in short intermolecular distance, means two molecules in solid are very close to each other. The very main reason behind that is because a attractive force acting between two molecules is really strong in solids, right? And the solids are incompressible and rigid in nature. You cannot compress the solid; they are going to be rigid. Okay. So after that, let's start with the classification of solids. How do we classify the solids? Right? How we are going to classify the solids. So solids can be classified on two bases. One is on the basis of arrangement order of particles. Another one is on the basis of type of intramolecular bonding. Okay, you can say on the basis of a bonding in a molecule. So there are the solids can be classified into different categories based on two bases. One is on the basis of arrangement of particles, another one is on the basis of bonding in the molecules. Clear? So on the basis of arrangement of particles, solids can be classified into two categories: crystalline solid and amorphous solid. So crystalline solids have regular arrangement and amorphous solids have irregular arrangement. Irregular arrangement, right? Or you can also call it random arrangement. So
On the basis of arrangement of particles, solids can be classified into two categories: regular arrangement, sorry, crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solids have regular arrangement, as let me show you. This is how the regular arrangement can happen. So this is an example of a crystalline solid. If I talk about the amorphous solid, then let's talk about that. So amorphous solids can be like this. So they do not have a regular arrangement. Arrangement is random in there. Irregular arrangement. Okay, these are the two types of solids on the basis of arrangement of particles. So now let's talk about the crystalline solids and amorphous solids in detail. What properties does crystalline solids have? What properties does amorphous solids have? So let's talk about that in detail one by one. So crystalline solids have a long range order, means the particles will be arranged in a regular, or should I say a arranged manner for a long range. They will be arranged in a orderly manner for a long range. As you can see in this diagram, see, all these particles are arranged in orderly manner, right? There is no randomness, they are arranged regularly. But if you talk about the amorphous solid, as you can see here, they have regular, this is regular slide, but that regular arrangement is only for a short range. It is only for a short range. So amorphous solids are either completely random, or even though they have some regular arrangement, that regular arrangement is only for a very short range. Is there for only very short range. So is that clear so far? Is it clear so far, guys? Quickly click on yes or no. Is it clear or no? चलो अच्छी बात. Let's move forward. चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? The next property about crystalline solids and amorphous solids is that crystalline solids have a very definite shape, whereas amorphous solids have irregular shape. Whereas amorphous solids have irregular shape. So what do I mean by definite shape? See, first of all, if I talk about the solids, we have discussed that solids have definite shape. Whereas I'm saying amorphous solids have irregular shape. What does that mean? It means that if you look at the surface of crystalline solid, the surface of crystalline solid is going to be very smooth, whereas the surface of amorphous solid is going to be irregular. Okay, it will not be a smooth shape. Like let's compare. Compare a metal like an iron bar and a glass. Compare an iron bar and a glass. You will see that iron bar surface is very smooth, whereas glass surface is not smooth, because if you rub your hand over the glass surface, it might cut your hand. And that is because there is irregularity in the shape of amorphous solids. Although the glass has a definite shape, the shape is not changing automatically, right? Or the shape is not changing with time. The shape is definite, but that definite shape that does not mean that the surface is regular or irregular. So here we are talking about the irregular shape of the surface, whereas in the crystalline solids, this shape is definite of surface. The surface have a definite shape. It's not irregular, it's a regular shape. Clear?
Are you guys clear so far? Yes or no? You click on yes or no. Okay then, let's move forward. Now, if you cut the crystalline solid, then it is going to divide. It is going to be divided into two or more regular plane surfaces. Since all the particles are arranged in a regular manner, if you cut it from a particular point, this will be divided into two equal categories or two equal parts. Hence, the surface will remain regular plane surface. Whereas the amorphous solids will be, on cutting the amorphous solid, we are going to get irregular surface. Yes, sir, we are going to talk about the examples of these solids. We have to wait, just wait for a few more minutes. Okay. So what do I mean by cutting irregular plane surface, cutting irregular plane surface? Why does this happens? Why does this happens? So let's talk about that, right? So let's say this is a crystalline solid. This is a crystalline solid. Regular engine. So this is a crystalline solid, and simultaneously drawing a amorphous solid as well, right? Then now, what I'm doing now is I'm going to break this solid, or I'm going to cut this solid from any particular place I like. Okay, so if I am cutting this solid from here, if I'm cutting this solid from here, what you are going to observe is that all these particles are at equal distance from the surface. Similarly, in this also, even if I cut this from right here, you can see all these particles are at equal distance from the surface. So you are going to get it. So what you are going to do is you are going to get some regular shape even after cutting. But if I talk about the amorphous solid, अगर मैं amorphous solid में बात करूँ, तो amorphous solid में क्या हो रहा है? अगर मैं इसको यहाँ से काट, if let's say I'm cutting right through here, मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, तुम देखोगे ये जो solid है या ये solid particle था, वो तो बीच से कट गया. सिग्नल ये solid particle के बीच से कट गया. लेकिन ये वाला जो solid particle था, इसको तो हमने छुआ तक भी नहीं, right? Right? So here, this solid particle is right at the surface, and this one is slightly inside this surface. This is also right at the surface, and this one, if I talk about this one, this is inside the surface. So because of that, you are going to get irregularity on the shape. You are going to get irregularity in the shape. इसकी वजह से क्या हो रहा है? शेप जो है या सरफेस जो है उसमें इरेगुलरिटी आ रही है, राइट? यही होता है ग्लास का. यही होता है किसमें? ग्लास में. जब हम ग्लास को ब्रेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो आगे तक निकले रहते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो अंदर तक रहते हैं. और जब हम व्हेन यू रब योर आवर हैंड ओवर द ग्लास सरफेस, क्या होगा, इसके ऊपर से अपना हाथ आराम से स्मूथली निकलेगा. बट यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल थोड़ा इनसाइड है, तो यहाँ से हाथ अंदर जाएगा. अब जब हम अंदर से जा रहे हैं लेकिन ये पार्टिकल थोड़ा बाहर निकला हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपने हैंड को क्या करेगा, चोट पहुंचाएगा, राइट? दिस इज गोइंग टू हैव a scar on our hand, right? So that is why amorphous solids do not have regular shape on cutting. Clear? Is that clear?
Okay, let's move on. Okay, what is the next property? The crystalline solids have a sharp melting point, whereas amorphous solids have a range of melting. What do I mean? What do I mean by that? What do I mean by that is, let me draw these particles again. Let me draw these particles again. Okay, so this is a crystalline solid, and let me draw a amorphous solid as well. With a randomness. Clear? Now, if I am looking at the distance between these two particles or these two particles or these two particles, the distance is exactly same. Distance क्या है? एकदम बराबर है. Similarly, अगर मैं इस डिस्टेंस की यहाँ पे बात करता हूँ या इस डिस्टेंस की यहाँ पे बात करता हूँ या इस डिस्टेंस की यहाँ पे बात करता हूँ, ये डिस्टेंस भी सारी क्या है? सेम. अगर डिस्टेंस सेम है इसका मतलब बॉन्ड भी सेम है. इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड भी एग्जैक्टली सेम है. और जो बॉन्ड एग्जैक्टली सेम है, डिस्टेंस क्या है? सेम. डिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड्स आर सेम. और अगर बॉन्ड सेम हो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी सेम. तो अगर एनर्जी सेम है, यानी कि मुझे सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो सेम काइंड ऑफ बॉन्ड मुझे ब्रेक करने पड़ेंगे. और अगर मुझे सेम काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे तो मुझे सेम एनर्जी चाहिए होगी. और अगर मुझे सेम एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? टेम्परेचर भी सेम ही चाहिए, राइट? अगर सेम ही टेम्परेचर चाहिए, इसलिए क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. फिक्स्ड, और आई कुड से कांस्टेंट. That is the reason why crystalline solids have sharp melting. बेसिकली क्या है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, राइट? तो सॉलिड से जब हम लिक्विड में जा रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं, राइट? और अगर पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं यानी हमें कुछ बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे. और अगर सारे बॉन्ड ही सेम है तो हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें सेम एनर्जी चाहिए. तो सारे बॉन्ड ये पर्टिकुलर एनर्जी ब्रेक होना शुरू होंगे. सारे बॉन्ड क्या होंगे? एक पर्टिकुलर एनर्जी पे ब्रेक होना शुरू होंगे. ना तो उस पर्टिकुलर एनर्जी से कम एनर्जी ब्रेक होंगे, उसके ज्यादा से ज्यादा पे हम जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही वो ब्रेक हो जाएंगे. और अगर एनर्जी हमें सेम चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल सा है कि हमें टेम्परेचर सेम चाहिए. क्योंकि किसी भी कंपाउंड को अगर हम मेल्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. और टेम्परेचर बेसिकली करता क्या है? थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता है. टेम्परेचर क्या करता है? थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कराता है. वही थर्मल एनर्जी क्या कर रही है? बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प. वही थर्मल एनर्जी क्या कर रहा है? बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है, राइट? तो अगर बॉन्ड सेम है, एनर्जी रिक्वायर्ड सेम है, तो जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो एनर्जी देने के लिए वो भी क्या होगा? सेम होगा. इसीलिए crystalline solids have sharp melting point. Means they have a fixed value of melting, like ice. Ice has melting point 0 degrees Celsius, right? Ice has melting point is equals to 0 degrees Celsius. Clear? Now, if I try to study the same things in amorphous solid, as you can see, the amorphous solids have different distance or different
separation between two continuous particles, right? Different separation between two continuous particles, and because of that, if you want to separate two particles of amorphous solid, you will need to break different bonds. And if bonds are different, that means energy required will be different. And if the energy required is different, means the temperature which you need to break those bonds will be different. Hence, the melting point is different. Melting point is different. So here the distance is not same. Distance is not same. That would mean bonds not same. And if bonds are not same, that means energy required is not same. And if the energy required is not same, then that means temperature required is also not the same. Hence, they have a range of melting point. So that means the temperature range. That means they have a temperature range. Okay? Clear so far? Yes or no, guys? जल्दी से क्लिक कर दो ये सुनो पे क्लियर है या नहीं है ओके चलो आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड the next property about the solids of about the crystalline solids and amorphous solid is that crystalline solids are considered as a real solid whereas amorphous solids are considered as pseudo solid. So talking about that, what exactly is the real solid and pseudo solid? See, a particular particle which is in a solid state, have a regular arrangement, have a definite shape, that is called real solid. That is called a real solid. ऐसा है कि shape क्या है? Definite shape है. Regular arrangement और shape क्या होगी? Definite होगी. तो ऐसे सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? रियल सॉलिड बोलते हैं. लेकिन अमोर्फस में एक्चुअली होता क्या है? अमोर्फस सॉलिड्स जो हैं उसमें होता क्या है कि जो पार्टिकल्स जो हैं थोड़ा सा बहुत ही सुपर सुपर स्लो स्पीड फ्लो बहुत ही कम स्पीड पर फ्लो करते हैं. ठीक है, मतलब उनका क्या होगा बहुत लॉन्ग टाइम के बाद अगर तुम देखोगे तो थोड़ा सा जो सरफेस जो थोड़ा सा चेंज हो चुका होगा. ठीक है, और वो होता किस लिए है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्लोली फ्लो कर रहे हैं. जैसे अगर गैस पार्टिकल की बात करूं, गैस के पार्टिकल्स जो बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, लिक्विड में क्या होता है? काफी ठीक ठाक उसका फ्लो रहता है, आराम से पार्टिकल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं. लेकिन अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो पार्टिकल्स जो है वो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं. पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, वो पोजीशन मूव नहीं करते. लेकिन अमोर्फस सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता. अमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल जो है बहुत ही स्लो स्पीड से, अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल जो है बहुत ही स्लो स्पीड पे मूवमेंट करते हैं. ठीक है, बहुत धीरे धीरे आगे खिसके या पीछे खिसके. उससे क्या होगा कि उनका जो फ्लो है वो क्या हो रहा है? बहुत ही सुपर स्लो हो रहा है. बहुत ही सुपर स्लो हो रहा है. और फ्लो है, फ्लो का मतलब क्या है? लिक्विड है. फ्लो का मतलब क्या है? वो एक लिक्विड है. सो दैट मीन्स दे आर नथिंग बट सुपर कोल्ड लिक्विड. सुपर कोल्ड
liquid. So basically, what is the thing? The thing is, amorphous solids are nothing but super cooled liquid. लिक्विड था, हमने क्या किया उसको, एक कोई या ऐसा बोलते हैं, एक मटेरियल था, एक मेटल था जो लिक्विड स्टेट में था, हमने क्या किया, सडनली उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया। हमने क्या कर दिया, सडनली उनका टेम्परेचर क्या कर दिया, ड्रॉप। तो क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, पार्टिकल्स जो ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं सुपर कूलिंग। उसको क्या बोलते हैं, सुपर कूलिंग। मतलब टेम्परेचर जो अगर रेपिडली अगर डाउन जाता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मेटर का टेम्परेचर अगर रेपिडली कम होती हो तो उसको बोलते हैं सुपर कूलिंग। ठीक है, तो जो एमोर्फस सॉलिड है बेसिकली है क्या, लिक्विड थे, उनको सुपर कूल कर दिया है। उन्होंने क्या कर दिया है, सुपर कूल कर दिया, इसलिए उनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, सो दैट्स दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ crystalline solids and amorphous solids. Now, moving forward, one more property that you can see here is that crystalline solids are anisotropic, whereas amorphous solids are isotropic. The first thing which we are going to talk about here is what exactly is anisotropic or isotropic. So first, let's talk about the isotropy. What is isotropy? Isotropy is basically same physical property like refractive index, like refractive index from all the directions. From all the directions. ठीक है, मतलब refractive index हो गया, resistance हो गया. Okay, these are the some physical properties. If those physical properties are same from all the directions, we are calculating the physical, we are calculating the refractive index, or we are calculating resistance from different angles, and the value is same in all the cases, then such or this property of solid is called is called isotropic. Is called isotropic. Now, if I talk about a crystalline solid, the crystalline solids have a regular arrangement. Now, if I'm going through this direction, okay, I'm going through this direction. So I'm getting these solid particles after a certain distance. Whereas if I'm going through this direction, again I'm going to get the solid particles at certain distance. But this time around, let's say this distance is A and this distance is B. A is not equal to B. A is not equal to B. अगर A और B बराबर नहीं है तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता क्या है, वो लाइट है, वो इधर से पास, लाइट है वो इधर से जा रही है, पहले इसे सॉलिड पार्टिकल से टकराई, कहीं भी उसको डेविएट होना था हुई, फिर इस पार्टिकल से टकराएगी, फिर जिधर उसको डेविएट होना था उधर लाइट डेविएट होगी, एंड सो अब जब यहां से लाइट आ रही थी तो उसको डेविएट होकर जाने के लिए और नेक्स्ट पार्टिकल पे पहुंचने के लिए कम डिस्टेंस थी, तो जो ये डिस्टेंस है जो डेविएट हुई है, distance which that light has been deviated is less, whereas if this have a higher distance, let's say this is how it is going to deviate, this distance is a high, and if the distance is high, then now this light is not going to go right through this particle but from the side of this particle, and hence it might go through this empty space, it might go through this empty space, so the refractive index might change. Okay, and because of that, the
crystalline solids are anisotropic. Are anisotropic. वहीं पे अगर मैं बात करता हूं किसकी, अमोर्फस सॉलिड्स की, उनमें क्या है, अरेंजमेंट थोड़ा सा रेंडम है। यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट थोड़ा रेंडम। अगर मैं यहाँ से अगर जा रहा हूँ तो कुछ डिस्टेंस बाद में पार्टिकल आएंगे, इधर आएंगे पार्टिकल। अगर मैं इधर से आ रहा हूँ नेट से तो कुछ डिस्टेंस बाद पार्टिकल्स आ रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं उनमें मैंने जैसे कुछ देर पहले बताया कि पार्टिकल्स जो हैं वो सुपर स्लो स्पीड में मोशन में कर सकते हैं। अगर एक बार वो पार्टिकल लाइट के पाथ में नहीं आ रहा था तो हो सकता थोड़ी देर के बाद वो वापस वहां पे आ जाए। और जब इस तरह से जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। और जब एवरेज निकालेंगे तो होगा क्या कि प्रॉपर्टीज है या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर एक डायरेक्शन से सेम ही आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is going to be same from all the direction and hence this is called isotropic. Or I could say the amorphous solids are isotropic in nature. Now, अगर अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उतना क्लियर है तो क्विकली यस पे क्लिक कर दो, एंड इफ यू इन डाउट देन क्विकली राइट इन द यस। यस यस डू दैट क्विकली, जल्दी से। अगर क्लियर है तो यस पे क्लिक करो, तो डाउट है तो जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो। ओके वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ यू कैन एग्री ऑन इट। ओके okay Rukmini, which part do you want to explain again? Okay Hariom, Rukmini, which part do you want to explain again? आइसोट्रोपी एंड एनिसोट्रोपी। ओके ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो बात करते हैं इसी की। देखो आइसोट्रोपी बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोट्रोपी इज a property of a solid that is if we are measuring the some physical properties like refractive index or resistance from different directions and the properties are giving us exactly same values, then the property is called isotropic, or such solids are called isotropic in nature. Clear है? Yes or no? Okay, good. अब बात करते हैं हम कि अमोर्फस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रोपिक क्यों होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एनाइसोट्रोपिक क्यों होते हैं। ठीक है, एनाइसोट्रोपिक क्या होता है? अच्छा एनाइसोट्रोपिक बताता हूँ क्या होता है। एनाइसोट्रोपिक होता है कि अगर मैं सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर कर रहा हूँ और वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है तो इस तरह की प्रॉपर्टी कहलाती है एनाइसोट्रोपिक। ओके, अब अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स थे वो रेगुलर अरेंजमेंट में थे, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो पार्टिकल्स जो क्या है रेगुलर अरेंजमेंट में। अब मैं यहाँ पे अगर लेट से इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ या लाइट है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करने के लिए होगा चाहिए लाइट से, लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, इस पार्टिकल पे टकराएगी फिर इस पे टकराएगी फिर इस पे टकराएगी ऐसे करके निकलेगी। रागी रागी refractive index is not an isotropy or anisotropy. Isotropy or
isotropic or anisotropic is the property of substance, is the property of a substance. ओके तो अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम आ रहा है हर एक डायरेक्शन से तो जो सब्सटेंस है वो आइसोट्रोपिक होगा। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम नहीं आ रहा है हर एक डायरेक्शन से तो हमारा जो सब्सटेंस वो एनाइसोट्रोपिक होगा। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक जो है वो हम सब्सटेंस के लिए चेक करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है प्रॉपर्टी। ओके क्लियर, गुड। सो अब अगर लाइट यहां से पास करे, ये इन पार्टिकल्स को एनकाउंटर करते हुए जाएगी और उसका एक डिस्टेंस उसको पता है कि इतने डिस्टेंस में दूसरा पार्टिकल आना है, इतने डिस्टेंस में दूसरा पार्टिकल आना है, राइट? यस यस कमिंग टू आउट, जस्ट वेट अ मिनट, है ना? तो जब यहां से हम जा रहे हैं तो हमें एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिलेगा, लेकिन जब मैं इस डायरेक्शन से जब जा रहा हूं तो तुम देख रहे हो कि जो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल जो चेंज हो गए। अभी वो क्या हो सकता है कि एम्प्टी स्पेस के थ्रू जा सकता है, राइट? एम्प्टी स्पेस के थ्रू जा सकता है, या मैं ऐसा बोलूं कि एग्जैक्टली यहां से चलो, तो यहां से तो पूरा वो खाली खाली निकल गया, कहीं से लाइट ने क्या नहीं किया है, कोई भी पार्टिकल को एनकाउंटर नहीं किया, सीधा निकल गया। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, होगा नहीं होगा, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, यानी ये तो एनाइसोट्रोपिक। अब मैं बात करूं कि अमोर्फस सॉलिड और आइसोट्रोपिक कैसे बन गए। उनमें तो ऑलरेडी अरेंजमेंट जो था वो इरेगुलर था, तो फिर वो आइसोट्रोपिक कैसे बने? तो देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इस डायरेक्शन में लॉन्ग जा रहा हूँ तो मुझे इतने डिस्टेंस के बाद में पार्टिकल मिला, फिर अगले इतने डिस्टेंस में दूसरा पार्टिकल मिला, एंड सो इधर से जब मैं डायरेक्शन में चेंज की, अभी भी मुझे क्या होगा, कुछ डिस्टेंस के बाद में एक पार्टिकल मिलेगा, सिमिलरली आगे कुछ डिस्टेंस में पार्टिकल मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने एक चीज बोला था कि जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो एक्चुअल में सॉलिड नहीं होते, बल्कि सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस और कोई सॉलिड अगर सुपर कूल्ड लिक्विड है तो वो क्या कर सकता है, हमने अगर तुम्हें याद हो तो लिक्विड में हमने देखा था कि जो लेयर ऑफ लिक्विड्स होती है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर सकती है। जो लिक्विड लेयर जो होती है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर सकती है। उससे होगा क्या कि ये पार्टिकल अभी यहाँ पर था, कुछ जगह में उसमें आगे मूव कर जाए, पीछे मूव कर जाए, राइट? उससे क्या होगा, हर एक डायरेक्शन से जब मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेक कर रहा हूँ तो इन मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स मुझे क्या मिलेंगे, हर एक डायरेक्शन से सेम डिस्टेंस पे मिल जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हम बोलेंगे ये तो एक आइसोट्रोपिक है। ये क्या है? आइसोट्रोपिक। समझ आया तुम्हें? हरिओम। ओके ओके, वेरी गुड। So then let's move forward. Okay. Now the problem is, you have a question. The question is, what makes a glass different from a solid such as quartz? Okay. Under what conditions could the quartz be converted into glass? These are the two questions. First, let me tell you one thing. First, glass chemical formula of glass is also as okay. Before going to that, let me write some examples that I forgot to write here. What are the chemical formula of crystalline solids and amorphous solids? So examples are uh, ice, okay, diamond,
Okay, these are the examples of crystalline solid. Talking about the examples of amorphous solid, this is glass. Okay, glass is nothing but SiO. Okay, these are the examples of crystalline solids and amorphous solids. Clear? Yes, plastic is also an example of amorphous solid. Okay, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. Question क्या है? What makes a glass different from quartz? Okay, क्वार्ट्ज का जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है? SiO. केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? SiO. लेकिन अगर बात करूं तो ग्लास जो है वो एग्जाम्पल है एक अमोर्फस सॉलिड का, और क्वार्ट्ज जो है वो एक एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो क्या डिफरेंस है ग्लास और क्वार्ट्ज? ये डिफरेंस फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन फिर भी दोनों डिफरेंट क्यों है? इन विच वन? राघवी, कौन सा वाले की बात कर रही हो? गिलास में या क्वार्ट्ज में? ओके, ओके, okay. See, if yes, yes, okay, Naveen. So let's see. What is the reason or what makes a glass different from solid such as quartz? See, glass and quartz both have different arrangement of particles. That is why one is amorphous, whereas another one is the crystalline. So quartz is crystalline SiO2, in which all, as you can see here, silicon oxide particles are regularly arranged, as you can see here, regular arrangement of silicon oxides. Whereas in the glass, you can see the arrangement is irregular, and hence this is amorphous solid. Right? Now, why? How do you convert this quartz into glass? How can you convert this quartz to glass? You can heat up to 1000 degrees Celsius and then supercool. Then super. So if you take quartz and heat it up to 1000 degrees Celsius and then start supercooling it, then you are going to get glass that is amorphous silicon oxide. Okay, clear? So the difference between glass and quartz is only of the arrangement of particles. So see, when you heat it up to 1000 degrees Celsius, this quartz is converted into liquid state, and now you are just supercooling that liquid to get the glass. Supercooled liquid. Clear? Okay, then let's move forward. Let's talk about the classification of solids on the basis of. Okay, before talking about that, let's do one more question. It is refractive index of a solid is observed to have the same value along all directions. Comment on the nature of the solid, and can this solid be cut with irregular surface?
Okay, okay, Srishti. What about the others? Okay, okay, Bhavna. Okay, Ragvi. Okay, let's see. Let's see. See, refractive index of solid is observed to have the same value. If it is same value, that means it is isotropic. It is isotropic. And if it is isotropic, that means it is a amorphous solid. This is a amorphous solid. And if the solid given is amorphous solid, that means it will have irregular shape on cutting. Irregular shape on cutting. So अगर irregular shape आ रही है, ये पूछा है उसने, can this solid be cut with irregular surface? Yes, definitely. So definitely. And nature is amorphous solid. Clear? Yes, okay. Correct. That much is clear, guys. Quickly click on yes. Yes, guys. Quickly click on yes. Okay, then. So let's talk about the classification based on the bonding. Classification based on the bonding. So on the basis of bonding, crystalline solids. Okay, one more thing. The classification based on bonding is done only for crystalline solids. This is done only for crystalline solids. Okay. So crystalline solids can be classified further into four categories on the basis of bonding. Those four categories are ionic, covalent, metallic, and molecular. Let me repeat again. On the basis of bonding, crystalline solids are classified as four types. Those four types are ionic, covalent, metallic, and molecular. Ionic solids will have ionic bond as intermolecular force of attraction. Covalent solids will have covalent bond as intermolecular force of attraction. Metallic solids will have metallic bond as intermolecular force of attraction. And molecular solids will have molecular bond like weak van der Waals force of attraction, weak van der Waals force of attraction, or hydrogen bond, or hydrogen bond. And because of this, these molecular solids are further classified into three categories. That is a polar molecular solid, non-polar molecular solid, and hydrogen bonded molecular solid. Okay, these are the further classification of molecular solids. We are going to discuss about these solids in detail in the next class. Okay, next class we will be discussing about these solids in detail. What is ionic solids? What are the properties of ionic solids? What are the covalent solids? What are the properties of covalent solids? What are the metallic solids? What are the properties of metallic solids? What are the molecular solids? How do we classify them in polar, non-polar, and hydrogen bonded solids? What are the properties of polar molecular solids? What are the properties of non-polar molecular solids? And what are the properties of hydrogen bonded molecular solids? Okay, we are going to talk about all of that in
next class, which is on Tuesday, right? So we'll discuss all of that in that class. And after that, after discussing all of that, means what are the properties of ionic, covalent, metallic, and molecular solids, we are going to discuss about one more thing, which is introduction to general terms of crystalline solids. Means what is crystal lattice, what is lattice point, what are the unit cells. We are going to discuss all of that in the next class. Clear? Okay. Okay then. Now if it is clear so far, then quickly click on yes. If you have any doubt, then quickly write in the chat section. And meanwhile, I'm launching the feedback poll. So quickly respond on the